अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है रीजनल एनेस्थीसिया में। रीजनल एनेस्थीसिया में हमने पढ़ा है सेंटर और पेरिफेरल ब्लॉक। सेंटर ब्लॉक में हमने पढ़ा है स्पाइनल, एपिड्यूरल और कॉर्डल। पेरिफेरल ब्लॉक में हेड में कंप्लीट किए हमने 4 ब्लॉक्स और अपर लिम्ब में हमने किए थे 2 ब्लॉक्स, वो थे इंटरस्कैलियन अप्रोच एंड एक्सिलरी अप्रोच। आज जो हमारा तीसरा अप्रोच है इसमें वो है सुप्राक्लेविकुलर अप्रोच। सुप्राक्लेविकुलर अप्रोच जो करते हैं इसका मतलब है क्लेविकल के सुपीरियर में हम बुला करते हैं नर्व्स, उसको बोलते हैं सुप्राक्लेविकुलर अप्रोच। इंडिकेशन क्या है इसकी? लोअर आर्म की और एल्बो की। लोअर आर्म की सर्जरी कोई भी हो सकती है। लोअर आर्म की जो सर्जरी इसमें कर सकते हैं इस वाले ब्लॉक में, ये इम्पॉर्टेंट है लोअर आर्म के लिए। अगर हमने सुप्राक्लेविकल ब्लॉक किया तो लोअर आर्म की सर्जरी कर सकते हैं। एल्बो की सर्जरी भी कर सकते हैं इसमें, और फोर आर्म एंड हैंड की सर्जरी भी कर सकते हैं इसमें डिस्टल एंड प्रोक्सिमल ब्रेकियल प्लेक्सस की डिवीजन जो है वो ब्लॉक हो जाती है। यानी कि जब ही हम इंसर्ट करते हैं थ्रू सुप्राक्लेविकल, तब हम दोनों ब्लॉक्स जो ब्रेकियल प्लेक्सस की, हमें पता है ब्रेकियल प्लेक्स C5 से लेकर T1 तक जो प्लेक्सस बनाता है वो है ब्रेकियल प्लेक्सस, और जो प्लेक्सस हम उसके डिस्टल एंड प्रोक्सिमल डिवीजन जो है वो इसमें ब्लॉक हो जाते हैं। इसकी टेक्निक क्या है? पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रखना है और पिलो शोल्डर के नीचे रखना है। छोटा सा पिलो होना चाहिए कि वो आप शोल्डर में, ताकि नेक की एक्सटेंड हो जाए नेक आपकी, और आर्म एक्सटेंड करनी है, आर्म को एक्सटेंड करना है और एडक्शन देनी है टुवर्ड्स द बॉडी, रखना है आर्म। नीडल क्या करना है? नीडल इंसर्ट मिड पॉइंट ऑफ क्लेविकल। जो क्लेविकल है, कॉलर बोन है, उसके मिड में हमें क्या करना है? हमें मिड पॉइंट उसका देखना है। मिड पॉइंट कौन सा है? उसके सुपीरियर में 1 सेंटीमीटर एबो, इसीलिए इसका बोलते हैं सुप्रा मतलब एबो, सुपीरियर क्लेविकल। सुप्रा क्लेविकल इसका मतलब है सुपीरियर क्लेविकल के सुपीरियर में। पहले हमें मिड पॉइंट देखना है क्लेविकल के। मिड पॉइंट के बाद हमको क्या करना है? सुपीरियर 1 सेंटीमीटर जाना है और उसके बाद नीडल को इंसर्ट करना है। नीडल हमने इंसर्ट किया, उससे पहले नीडल इंसर्ट करने से पहले हमको पाल्पेट करना है सबक्लेवियन आर्टरी, ताकि नीडल हमें इंसर्ट ना हो जाए सबक्लेवियन आर्टरी। देन नीडल को हमें लेटरली इंसर्ट करना ताकि हम थॉरैक्स में ना, नीडल को थोड़ा सा लेटरली रखना है। जो है हमने लेटरली नीडल को रखी, फिर इंसर्ट किया, पहुंच गए हम डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल डिवीजन ऑफ प्लेक्सस में। और फिर हमें क्या करना है? इंसर्ट करना है डाउनवर्ड्स। लेटरली हमने नीडल रखी डाउनवर्ड्स। पहले हमें मिड पॉइंट देखा क्लेविकल का, उसके स्पीड में 1 सेंटीमीटर, फिर लेटरली नीडल डाली, लेटरली रखी हमने नीडल, और उसके बाद हमें इंसर्ट करनी है नीडल अंदर, और फिर बैकवर्ड्स पीछे की तरफ इंसर्ट की नीडल अंदर, फिर बैकवर्ड्स पीछे की तरफ इंजेक्ट किया 20 to 30 ml लोकल एनेस्थीसिया, और फोरआर्म एंड हैंड की वो कर सकते हैं इस ब्लॉक में। कॉम्प्लिकेशंस क्या है इसकी? न्यूमोथोरैक्स हो सकता है अगर हमने लेटरली नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, ताकि नीडल अवॉइड कीप नीडल, हम क्या करते हैं? लेटरली नीडल डालते हैं, ताकि ये कैसे अवॉइड कर सकते हैं हम? लेटरली नीडल को रखना है। मैंने पहले भी बोला कि लेटरली नीडल को रखना है, उससे क्या न्यूमोथोरैक्स अवॉइड हो सकता है। फेरिक नर्व भी ब्लॉक हो सकता है अगर हमने फेरिक नर्व का इंजेक्ट किया लोकल एनेस्थीसिया। और हार्नोल सिंड्रोम, फेशियल जो एक्सप्रेशन है फेशियल ब्लॉक हो जाएगा, इसमें उसको बोलते हैं हार्नोल सिंड्रोम। नर्व इंजरी हो सकती है, IV इंट्रावेनस इंजेक्शन भी हो सकता है। और ये था हमारा सुप्राक्लेविकुलर ब्लॉक। इसकी सेम सर्जरी इंफ्राक्लेविकुलर के ब्लॉक के में आती है। लोअर आर्म, एल्बो एंड फोरआर्म हैंड भी कर सकते हैं इंफ्राक्लेविकुलर ब्लॉक में। इसी में डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल डिवीजन ऑफ प्लेक्सस ब्लॉक होते हैं। इसमें भी
क्लेविकुलर में, मगर इसमें क्या करना है, इसमें नीचे से, ये था हमारा क्लेविकल, इसके मिड पॉइंट में, इसके मिड पॉइंट के नीचे से इसके जाना है नीचे से 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर बिलो द क्लेविकल, इसलिए इसका नाम है इन्फ्रा यानी कि इंफीरियर ऑफ क्लेविकल, 2 सेंटीमीटर जाना है। फिर सी देख सकते हो, इंफ्रा और सुप्राक्लेविकल अप्रोच, ये थी हमारी 2 अप्रोच। इसके साथ हमने की खत्म अपर लिम्ब के ब्लॉक्स, ये आ गए थे यहाँ तक अपर लिम्ब ब्लॉक्स। The supraclavicular brachial plexus block was for many years known as the spinal of the arm, dense, fast, and complete. For these reasons, it remains a core technique for many anesthesiologists. In this video, we'll discuss the anatomy, indications, and how to perform it safely. The supraclavicular brachial plexus is approached just cephalad to the clavicle at the level of the distal trunks or proximal divisions. The plexus is packed tight in this region between the first rib and the clavicle, making it a convenient location to anesthetize the entire upper limb with one injection. Note that as a plexus travels inferolaterally, the phrenic nerve continues straight down into the chest by traveling medially off the anterior scalene muscle. The result is that while phrenic nerve blockade is not as frequent as with interscalene, it occurs in up to roughly half the time with supraclavicular, depending on the volume of local anesthetic used. The supraclavicular brachial plexus block is excellent for anything on the upper limb from the shoulder down to the fingertips. Note that there is no coverage of the medial arm, as that's the intercostal brachial nerve territory. We use supraclavicular block for forearm, wrist, and hand surgery, for AV fistula creation, and for upper limb trauma. While a catheter technique is certainly possible, it's a shallow target in a highly mobile area, and catheters tend to be at risk for displacement. We prefer to place infraclavicular catheters for long-term upper limb analgesia as they stay put longer. Positioning is important. It helps to have the head of the bed elevated somewhat and the head turned away and flexed to the contralateral side. The arm is adducted and a bump or pillow is under the back. You want to create some working space over the supraclavicular fossa. Turning the patients laterally can make it easier to place the probe and needle in challenging patients. The probe is placed on the midpoint of the clavicle and the needle will enter in plane from the lateral aspect. One mistake novices make is not tilting the probe into the chest. This maneuver takes a fuzzy, less than ideal image of the artery and plexus and makes it crisp and clear. Here's the relevant sonoanatomy. You'll see the subclavian artery and the plexus just lateral to it, appearing like a bundle of hypoechoic grapes. Underneath the artery, you'll see a few bright white lines, and it's important to know which is which. The one that casts an acoustic shadow and is immobile is the first rib. It's usually directly under the artery, but not always. Beside the rib shadow, you can appreciate the pleura, which is shimmery and slides from side to side with respiration. The pleura doesn't cast acoustic shadows. Here we see it again, this time reversed. You see the plexus lateral to the artery and the rib underneath. The trapezius muscle is seen prominently on the lateral side. The needle is advanced from the lateral aspect, taking care not to contact the plexus, but rather slide under it. In this case, we have some room, but hydrodissection is often required. This location, beneath the plexus, adjacent to the artery, has been called the corner pocket, and it's important to get some local anesthetic here in order to anesthetize the inferior trunk. The goal here is to visualize the plexus peeling off the rib and artery, floating the plexus sheath up with local anesthetic. A second injection is made in order to sandwich the plexus between 2 layers of local anesthetic. Again, careful hydrodissection ensures that the needle never touches the plexus or even the sheath. And here are some tips for the supraclavicular brachial plexus block. Number 1, don't blow up the sheath like a grenade. Stay outside the sheath. Placing the needle directly inside the cluster of grapes is a common novice mistake and not without risk.
These investigators inserted needles carefully inside the supraclavicular brachial plexus sheath of cadavers, trying to stay outside any obvious nerves or fascicles. After injecting 0.2 ml of ink, they found that there was subperineural ink deposition in 24% of cadavers. We know that violating the perineurium puts nerves at risk. We also know that local anesthetic placed outside the sheath results in an awesome arm block. So let's just stay outside, shall we? Number 2. This area is very vascular. There are a number of arteries that arise from the subclavian, sometimes snaking their way across or even through the plexus. Always use the Doppler function before inserting your needle. This is a good practice with any block, but a must with supraclavicular. And finally, the plexus can be remarkably variable in its anatomic location. Sometimes we see nerves on the anteromedial side of the artery. It's for this reason that blocks with modest volumes, for example less than 15 to 20 mils, tend to fail periodically. The ED95 appears to be roughly 30 to 40 mils, so keep that in mind when you're planning the block. Of course, if you see fantastic spread with less, that's great, but plan on needing as much as 30 each and every time. The infraclavicular brachial plexus block is an extremely effective and reliable technique for anesthetizing the upper limb. It's a favorite of many longtime regionalists, and in this video, we'll discuss the anatomy, sonoanatomy, and the technique for blocking the brachial plexus in the infraclavicular fossa. If we consider the region just south of the clavicle and medial to the coracoid process, we see that the brachial plexus forms 3 cords that lie in close proximity to the axillary artery. They're named for their relation to the artery, and so we have the lateral cord, the posterior cord, and the medial cord. Their intimate relation with the artery means that the infraclavicular is essentially a perivascular technique. To effectively visualize and block the plexus, we'll want the patient supine, with the head of the bed slightly elevated. The head is turned to the contralateral side, and the arm is abducted to 90 degrees. The operator can approach the patient from the ipsilateral side or from the head of the bed, depending on ergonomics and the location of the ultrasound machine. The transducer is placed in a parasagittal orientation just caudad to the clavicle and just medial to the coracoid process. These 2 structures are in green here. This should get you an image like this. Here we see the pec major and minor muscles, and beneath those are the axillary artery and vein. The artery is going to be our main focus. Clustered around the artery are the 3 cords, the lateral and posterior typically on the cephalad side, and the medial wedged between the artery and the vein. The goal of the block is to advance a needle from the cephalad aspect through the pec muscles and land the needle tip just deep to the artery at the 6 o'clock position. Things are clustered tightly here, and you'll want to make good use of hydrodissection to keep those cords clear of the needle path. And it's often the case that you can see your artery well, but don't have a clear image of any of the cords. The great thing about this block is it doesn't matter. If you put your local at 6 o'clock, you'll be in great shape. We'll typically use between 20 and 30 mils of local depending on the patient's size and the pattern of spread. Here's an example of why it's not crucial to see the cords. I can maybe see the lateral cord in this image, but I wouldn't bet my life on it. That's okay, because my goal is to hit that 6 o'clock spot. You can see the local lifting the artery up and spreading in a U-shaped pattern. This is what you want to see. Okay, so here we see the axillary artery underneath the pec minor muscle. We can appreciate what looks like the lateral cord on the cephalad side. The needle passes through the pec major and pec minor muscles, and hydrodissection lifts the pec fascia off the artery. We want to scrape the paint off the artery, passing very close to it tangentially while we continue to hydrodissect. There, the needle tip is deep to the artery and we get immediate flow after passing through that fascial layer. Our aim is to see local anesthetic directly underneath the artery with no intervening structures or layers. Like the supraclavicular, this is a spinal of the arm, meaning you block nearly the entire upper limb, with one caveat. At this location, you don't reliably get the suprascapular nerve, which branches off the superior trunk, and for that reason, the infraclavicular approach is not ideal for shoulder surgery. Everything else is fair game though: arm, elbow, forearm, and hand. The infraclavicular approach is a favorite of many for one principal reason. It's a single injection, one and done. If you put 30 mils of local anesthetic immediately deep to the artery, you have a 100.0% success rate.
or at least very close. This is because you only have 3 cords, and they all lie in the same neurovascular plane as the artery. The supraclavicular brachial plexus block, by comparison, tends to fail occasionally with a single corner pocket injection, and it often requires 2 or even 3 separate needle passes and aliquots of local anesthetic to get a good effect. The other plus relates to catheters. Because the catheter is going through 2 fairly thick muscles, it holds well and doesn't move compared to a supraclavicular location where the plexus is shallow and the patient's neck is moving constantly. The chest wall is also a more comfortable place to have a catheter dressing compared to the neck. Here are some infraclavicular tips. First, there are a lot of vessels in this part of the body, so watch for where your needle travels. The 2 that are most at risk are the thoracoacromial artery, or its branches, and the cephalic vein. These typically lie in the plane between the 2 pec muscles, so it's a good idea to check for them before planning your needle trajectory. Second, it's a common novice error to inadvertently let the probe slide medial or lateral, making it challenging to find your landmarks. As long as you keep the narrow pec minor muscle on the screen, you should be in good shape. Here's our nice view. When the probe slides medial, we lose pec minor and end up very close to the chest wall. Going the other way, we pass by our optimal view and then end up losing the artery as we begin to see more deltoid and shoulder structures. Keeping both pec muscles on the screen anchors your image in the right place. And lastly, a criticism of the infraclavicular approach is that it's relatively steep and deep, which makes it difficult to see the needle at times. Heel toeing the probe so the beam is angled more towards the head may only change the angle by 10 to 15 degrees, but this vastly improves the likelihood you'll see your needle. Alternatively, we'll pull out the curvilinear probe sometimes, especially for patients with a lot of pec muscle. The fan-shaped angle of the beam can improve needle visualization, especially in heavy patients. And finally, the retroclavicular or raptor approach can provide excellent needle visualization due to the flattened trajectory. For an in-depth discussion of the raptor, check out this video. कि जो ब्लॉक्स है इंट्राक्लेविकुलर अप्रोच, एक्सिलरी अप्रोच, सुप्राक्लेविकुलर अप्रोच, इन्फ्राक्लेविकुलर अप्रोच, ये सारे अप्रोचेस चाहे वो हेड नेक के अपर लिम्ब के ये रीजनल एनेस्थीसिया में और पेरिफेरल ब्लॉक में, याद रहे ये पेरिफेरल ब्लॉक, ये आपको समझ आ गया होगा सारे ब्लॉक्स। अगर इसमें फिर भी आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आ गया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते ये ब्लॉक्स कैसे करते हैं और इनकी कॉम्प्लिकेशन और इसकी पोजीशन और इसकी इंडिकेशन मेनली जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूँ। आप लिख सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो इसमें नोट्स, क्योंकि मैं जो पॉइंट अलग अलग से डिक्टेट करता हूँ वो आप लिख सकते हो, क्योंकि आसानी रहेगी आपको लिखने में फिर बाद में। इसी तरह आपको नोट्स भी बना सकते हो, इंडिकेशन लिख सकते हो, फिर टेक्निक लिख सकते हो, कॉम्प्लिकेशन लिख सकते हो। इस ब्लॉक में इतना ही आता है और ये 5 मार्क्स का ब्लॉक आता है। कोई भी ब्लॉक अगर पूछा जाए ये लिख सकते हो आराम से। फिर भी अगर कोई नोट बनाने में कोई दिक्कत होगी या समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। याद रहे ज़्यादा से ज़्यादा ये शेयर करना है और कमेंट करना है और लाइक, कि आप लोगों को समझ आता है ये जो मैं समझा रहा हूँ, ये सारे ब्लॉग्स और जो भी टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक तक फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह आपका नस्र हामी हो।